नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए हैं कि डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग नितिन जोशी अंकल जी ने लिखा था, जो कि किसी कारणवश आज खुद नहीं पढ़ पाएंगे। उनके पिताजी श्री कर्नल S.K जोशी अंकल वो इसको आज रीड करेंगे। हम सबका भाग्य है कि उनसे हम सुनेंगे ये सत्संग। और आज का सेशन श्रीमती ललित माथुर आंटी इनिशिएट करेंगी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं और ललित जोशी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन ललित माथुर आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू माथुर आंटी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा प्रणाम। We are extremely privileged today. Joshi uncle will be reading out his son Nitin's chapter with Guruji. The real treasure is hidden from the Holy Granth Light of Divinity. जब गुरुजी 1998 में एम्पायर स्टेट के छोटे मंदिर में विराजे, तब का मुझे ध्यान है कि नितिन शायद जब कॉलेज में थे, तो what stood out was his immense commitment, his sincerity and humility while doing seva at the Chota Mandir. He served with so much dedication, just like his parents. जोशी अंकल आंटी तो हमारे रोल मॉडल्स हैं, उनसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतनी उनकी कंप्लीट डिवोशन देखकर बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी छोटे मंदिर में। और हम सबको तो उनके सत्संग से बहुत सीखना चाहिए। बहुत इतनी उनके अंदर जो ह्यूमिलिटी है, इतनी सेवा इतनी डेडिकेशन से करते थे, तो बहुत ही आनंद आता था। आई रिक्वेस्ट जोशी अंकल टू बिगिन हिज रीडिंग। अंकल आप प्लीज जहां भी चाहें तो आप ऐड कर लीजिए। मैं आई वुडंट लाइक टू इंटरप्ट यू। आप तो इतना आपका सौभाग्य रहा है गुरुजी के इतने पास रहने का, इतनी सेवा करने का, कि हमें तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। प्लीज अंकल आप शुरू करिए। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी वासन अंकल। आंटी, I do not know whether I deserve all that you have spoken about. I mean it But, genuinely. No. The question is, what I feel personally, that what good deeds, what have we done, or from where Guruji wanted to pull us out, from what morass that Guruji took us into his sharan and gave us opportunity to do some seva. In fact, if one does seva, he does it from his personal interest, It is, ये सेवा तो कभी निष्काम हुई नहीं। जिसकी सेवा निष्काम हो गई उसका तो कल्याण हो गया। So without taking much time, I'll like to read, and I'll definitely like your involvement in this, because in the very first statement, the heading which the Nitin has given it to it, with Guruji's, the real treasure is hidden. Now, Guruji used to say, असली चीज लैन कोई नहीं आंदा। ਜਿਹੜੀ ਪੂੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਕਰ ਦੋ। Now I think
This all is encompassed in this heading. With Guruji, the real treasure is hidden. बहुत complete heading है. So I'll read it now. If you could penetrate the worldly facade, if you could penetrate the worldly facade he presents. Now, it has a lot of meaning. If your gaze can see beyond it to him. Now, if your gaze can see beyond it to him, then you shall be blessed with an all-encompassing shelter. For me, this is the focus when being with Guruji. There is a wall made up of your ambitions and desires. As I told earlier, mera aa kar do, mera aa kar do, mera aa. That keeps you from getting to the real him, to achieving his bhakti. With Guruji, your desires and ambitions are put into perspective and fulfilled, though you get what is right, not necessarily what you dream of. But it is beyond this facade, the wall, that the true fruits lie unexplored. So what I said, जेड़ी असली पूरी मेरे कोले है वो कोई लेन नहीं आंदा. Now that is what nobody could understand, in my opinion, what that real puri was. वो पुड़िया थी क्या, कोई समझ नहीं पाया, और जो समझा उसका तो कल्याण ही हो गया. If you can scale the wall, you get to the real treasure. If you can scale the wall, now knowing Guruji is really scaling a wall. It's so difficult. Anyone can pretend to be knowing Guruji very well, but does he really know him? That's a big question. He puts you to the test. Now, I'll tell you a small incident with regard to this test. Once in Jalandhar, we had gone to a Sevadar's house where Guruji has come. And Nitin was sitting beside him. And langar was served, and Guruji gave him a green chili. It was a green chili. And Guruji said, Khale. At that time, this must be around 94, 95, I suppose. That he must be around 14, 15 years of age. And he was given that green chili and he ate it. Now, it was really hot chili. Now, you can imagine a 14, 15-year-old child biting on a chili, and Guruji laughed at him. You know, again, this is a facade. At times he used to behave like a child, and he started laughing at him. As if he is enjoying that, isko mirchi lag gayi hai, bahut zabardast. But then, kind as he has always been, he ordered for some sugar and he said, "Really, ye kha le." Now, the question is, why he gave him that chili? And what he did by giving him that chili? You can call it as a test. Let's see how he accepts an order by Guruji or a commandment by Guruji. Does he take it or he doesn't take it? He took it. And if he took it,
What Kalyan he did is known to him only. It cannot be comprehended by us. That is what I feel. So I'll go beyond. आपने अंकल So बहुत अच्छे he से puts you. आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट करा है ये एग्जाम्पल से कि बच्चे ने कैसे इतने ओबीडियंटली वो ऑर्डर ओबे किया। एंड गुरुजी तो यही देखते इतने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतने सिंपल से टेस्ट हमें देते थे हमारा वो गेज करने के लिए फेथ कितना है, और वो उसमें से वो पार हो गए तो बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। And now it says he puts to the test and will squeeze you like a lemon and shake you like a tree. These were his words. Will squeeze you like a lemon and will shake you like a tree. And Guruji used to say very often, क्योंकि गुरुजी के पास बड़े आए, काफी चले गए, इसके ऊपर मैं ज्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता, बट द क्वेश्चन इज, many times Guruji used to tell some people, चलो फिर तुम्हारा तो काम बन गया, चलो अब हमसे क्या मतलब, हम आपके हैं कौन. These were Guruji's dialogues and it had, महापुरुष जो कुछ भी बोलता है, it has lot of meaning. Every word spoken by Mahapurush has a meaning. And so we used to say, I have been blessed with tremendous past karma and sanskars, that is hereditary qualities, and that his divine will gave me a chance to come into contact with him. It's impossible for me to describe Guruji. Thoughts overwhelm my mind. If Lord Ganesh could not describe him, who am I? We began going to Guruji's place with no expectations. Hope or troubles, and it was his magnetic charm that got us back again and again to him. Now the next paragraph says, drop your pretensions there. Auntie, do I go ahead? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। It says, drop your pretensions here. Now, I will now read it in third person. He used to take breakfast for the sevaks in the mandir. That was in that used to happen in Jalandhar, because we are staying in Kent, and Guruji used to stay in Defence Colony. And in the morning, Guruji was usually in Path at that time. And we used to keep Fridays fast. My parents used to keep the Friday fast. This typically means not eating anything that's sour, not even touching it. And once it was a Friday, and my mother had strictly instructed me not to consume any such thing. That day, Guruji was out early, and as I came in, he instructed another devotee, Sudama, to get me a cold drink. I was more than happy to have Guruji's delicious prasad and left contented, thanking my stars for his darshan and the unexpected prasad, but I was scolded at home. Dharake Mane, his mother told him, why did you take that cold drink? Well, that is where the catch lies. Probably the parents did not have that faith which the child had.
He took the prasad, although instructed not to take anything sour. But I was scolded at home. I was dejected, but brushed aside the episode. Brushed aside. Where was I reading it? But brushed the episode aside. Last paragraph. Okay. In the evening, we went to the mandir again. Guruji was in a good mood and sat down for satsang. We were all listening intently. He made a comment about the fast people keep, remarking that such a practice was bogus. Now, Guruji always maintained, he told number of times. In fact, we also used to keep fast. नवरात्रि के हम फास्ट रखते थे 9 दिन का. In Sultanpur, के फास्ट रख के की होंदा है. And after that, we have never kept the fast. Because you know what is happening in the fast. From the morning till the evening, firstly, you are hogging on the name of Falahar. A. B. Then you are talking ill of people. Second thing, you are telling lies here and there. You are doing wrong things. So that's why he used to say the fast is bogus. Because when you are not doing good things, you are not following a strict regimen of a fast, then what? It's only a drama. It's only a you are trying to show to the world that I'm so religious, I'm so spiritual. Now, that's why Guruji used to say that all these things are bogus. And that is where his he used to point out towards you being, it's important to be spiritual from your heart rather than believing in सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना है, खट्टा छूना नहीं है, खट्टा कुछ नहीं करना है. And you know, the best part of it was that you have to do udyapan, you know, as a protocol say. So I had not much of a problem after I had gone to Guruji. So we wanted to do udyapan, and it was a Friday again. And since it was a Friday, so my wife was teaching in the St. Joseph's school nearby there. So I had gone to Guruji in the afternoon, or rather pre-afternoon session, and she also came from the school. And that day, the langar was makhi ki roti and curd that was being served in the langar. I was given the langar, I ate it. I never had the second thought, you know, I just ate it. But auntie was still, you know, bound by those rituals. She went inside and she ate that chapati only with some gur or something like that. She didn't eat that curd. Anyway, so langar khatam ho gaya. Now, this is how Guruji used to teach you lesson, I'm telling you. Next, when she came back to the Darbar hall, Guruji told her to peel off certain quinoos. कीनू छिल के लेके आ जा नून पाके. कीनू छीले, खट्टा है कीनू तो छीलने पड़े, नून भी पाना पड़ा. Now the story did not end there. After she brought that thal of quinoos, peeled quinoos, Guruji said, "ये सारी संगत नू वर्ता दे." तो खट्टा खाना नहीं है, खट्टा किसी को देना नहीं है, खट्टा कुछ नहीं करना है, तो खट्टा तुम मत खाओ, कोई बात नहीं. I know that you have not eaten खट्टा, so what? Peel quinoos,
distribute kinus to everyone in the Sangat, so that वो जो ढकोसला था ना, खट्टा नहीं खाना है, खट्टा फ्राइडे को ऐसा करना है, फ्राइडे को ऐसा करना है, so he finished it off in one stroke without saying anything. So that is how Guruji used to take you out from those, rituals, such rituals which had no meaning. तो हमें कुछ नहीं हो, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ कि हमने खट्टा खाया. मेरे को तो खैर हुआ ही नहीं, आंटी को भी नहीं हुआ. Because the Almighty is there who is telling you to do something. He is giving you prasad, you eat it. Rather than thinking about it, khatta hai, meetha hai, or whatever. So in the evening, we went to the mandir again. Guruji was in a good mood and sat down for satsang. We were all listening intently. He made a comment about the fast people keep, remarking that such a practice was bogus, as was his wont. He didn't say it directly, but the point drove home. You are at the house of God. Do what he tells you and forget the humdrum practices that pretend to reach God in silly ways. Very, very, very true. अंकल मैं थोड़ा सा ऐड करूं. हाँ जरूर. मुझे ये आपका ये सुन के बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि हम कितने बेवकूफ, ऑब्स्टिनेट, क्या कहना चाहिए, मंद बुद्धि वाले, के प्रसाद की सिग्निफिकेंस सच्ची नहीं समझ में आई. हम जब छोटे मंदिर जाते थे तो मैं थर्सडे का व्रत किसी पंडित जी ने बेटे के लिए बताया था तो रखती थी. तो मैं बड़ी खुश होती थी कि गुरुजी ने इसमें कुछ मीठा रखा है. जैसे आप बता रहे हैं ना, थर्सडे में नमक नहीं खाते थे, तो रोटी प्रसाद के साथ में वो जो भी लड्डू होता था, खीर होती थी, अपना शेयर वो उससे खा लेती थी और बड़ी खुश कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं. फिर बहुत दिन बाद पता चला कि ये तो प्रसाद है, इसमें क्वेश्चन नहीं करना है कि नमक है कि मीठा है. ऐसे शिवरात्रि पे हमारी मदर इन लॉ ने शुरू से रखवाया था, शादी के एकदम बाद से उन्होंने कहा सारी उम्र रखना है और अन्न नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, सिर्फ ये और नमक नहीं खाना है. तो एक दफे जब बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया शिवरात्रि पे, बहुत पहले की बात, 2001 या 2 की बात है, तो बहुत कम लोग थे और उन्होंने ऐसे ही मेरे से कहा, आगे बैठे थे, तो जा लंगर खा के आ. तो मैं चली गई और बहुत बढ़िया प्रसाद, इतना बढ़िया, पूरी सब्जी सब कुछ, बट वही मदर इन लॉ का कहा हुआ कि नहीं, वो कैसे वो कर सकते हैं. तो मैंने देखा कि उसमें वहां पे वो सब में तो मीठा कुछ वो नहीं, तो मैं वापस आ गई, ऐसे ही बैठ गया. के फिर गुरुजी ने दूसरी दफे कहा जा लंगर खा के आ. फिर मेरे को दूसरी दफे बेर दिख गए, तो फिर चलो बेर कुतर लेते. बट गुरुजी ने तीसरी दफे नहीं कहा. मतलब ही हैड हिज ओन सटल वेज ऑफ टेलिंग यू नो एंड आई फेल्ट वेरी बैड दैट आई एम चीटिंग ऑन हिम. बट मतलब तब भी समझ में नहीं आई. मतलब इतने हम बेवकूफ होते हैं. बहुत साल बाद बड़े मंदिर में बैठे बैठे एक फ्रेंड ने कहा कि शिवलोक में, उस वक्त फिर मैं हेजिटेट करी कि प्रसाद ले जाऊं, शाम को खा लूंगी और ये सब, कि तो उसने कहा शिवलोक में बैठी हो और ये सोच रही हो. तब जैसे गुरुजी ने उससे कहलवाया तब समझ में. उसके बाद से फिर ये सब हमने परहेज छोड़ दिया. मतलब इतने हमारे डीपली इनग्रेन्ड होते हैं कि सच्ची बहुत टाइम लग जाता है. और गुरुजी की तो कितनी सिंपलिस्टिक वो थी. मतलब उन्होंने ये सारे हमारे वहम छुड़वा दिए और वाकई में आप बिल्कुल ठीक करें. अब कुछ फर्क नहीं पड़ता. नवरात्रों में अगर हमने प्रसाद में प्याज भी खा ली थी तो कितना रोक टोक था, ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, एंड एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट. सच्ची में गुरुजी ने हमें बहुत सिखाया है. इतना मतलब गेटिंग टू द बेसिक एसेंस ऑफ रिलीजन के इन चीजों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मगर वो हमारे सिस्टम में इतने इंग्रेन थे कि हमें बहुत टाइम लगा. थैंक यू अंकल, बहुत अच्छे से आपने एनलाइटन किया है. No, that is where the heading of this satsang is. With बिल्कुल Guruji, बिल्कुल the real treasure is hidden. बिल्कुल Now, बिल्कुल. गुरुजी कहते सीगे सोचो, गुरुजी कहते थे सोचो. So if you mull over all these things, that Guruji has always tried to pull you out from that, that morose, that rituals. Useless. He always Useless tried to rituals. pull you out of. And
Guruji always tried to put you onto the right path. Spiritual path. A guru, a Mahapurush, when you have come to his shelter and when he has held your hand, no matter how many lives, how many births you take, till he has taken you to the destination, and that destination is ultimate, till he has taken you to that destination. Because as a human being, it is very difficult to really understand the spiritualism. It's very, very difficult, you know. You understand for some time, like it happens, you go to a funeral and that feeling comes in your mind that what is this world, everything, you also have to finish like this. The moment you get out, then you again get into the worldly facade, what he has mentioned in his writing. You always get into that worldly materialism. So Guruji always try to take you out of that materialistic cover which is there in your soul, because your soul is encompassed, is filmed with materialistic cover, and since it is covered with the materialistic cover, hence you are unable to see him within you. He is residing within you, but you have not been able to see because that mirror, the mirror of your soul is covered with so much of materialism that you can't see that image. The day that materialism is out, that cover is out, that dust is out, that muck is out, then वो कहते हैं ना, एक दिल के अंदर है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखी, तो वो तस्वीर तो तभी दिखेगी जब ये दिल का आईना साफ होगा, क्योंकि बैठा हुआ तो है, बिल्कुल, दिखेगा कब? तो that is where I think I will not get into more into this. बहुत अच्छे से समझा रहे हैं. Now, a laddu the size of 2 cricket balls. Now, Guruji blesses some people with the Sachkhand Prasad. Prasad that he produces by divine will and which is referred to as a miracle. I have been fortunate enough to experience many such instances. Gold earrings in dollar notes, hot halwa, misri cased barfi, chocolate and vanilla barfi, motichur and besan laddus, Himachali hat, and likewise. Thankfully, we were also very fortunate to see all these things. And first time I saw this prasad, manifestation of this prasad. I won't call it a miracle, because miracle is something different. It has a different connotation or meaning altogether. You know, what is Sachkhand? I had earlier spoken about it, that in one of the satsang I have told about it. It is the ultimate. You know, that is where the ultimate resides. That is what Satskhand is. So, to get a prasad from there, very it will have its own significance. It has its own aroma. It has its shape, size, and taste, which is so different from the bird. So, first time when Guruji came to my house, so it was first time in Jalandhar. Guruji came to our house, and he came to our house, and he went to the bedroom, and there was one brigadier and his wife, his 2 daughters, and
that time Brigadier Mohan Singh, who subsequently retired as General Mohan Singh, Mami ji, Mama ji and Mami ji, they had come to our house and Guruji was eating pakoras. You know, पकोड़े बनाए थे क्योंकि पहली बार गुरुजी आए थे, किसी सेवादार से पूछा था गुरुजी के लिए क्या देंगे, उन्होंने कहा पकोड़े चाय बस, नथिंग एल्स. तो पकोड़े खा रहे थे and suddenly he told that brigadier's daughter, he suddenly, Guruji said, and like this he gave, and this was a laddu which grew in size, which was a mystery ultimately, and he gave a small little piece to everyone from that and gave the balance to that girl. Now, this all happened, and after that what happened was, Guruji used to come like a, like a, जैसे सडनली रोशनी जलती है ना, वैसे गुरुजी आ जाते थे. और जब गुरुजी उठ के जाते थे तो वैसे ही जाते थे, बिजली की करंट की तरह गुरुजी बाहर जाते थे. तो दैट डे गुरुजी वाज वेयरिंग a red t-shirt and a cream trouser, and he had white shoes. He has opened the shoes when he sat down in our bedroom in the bed, and those shoes were kept underneath the bed. A carpet was spreading underneath that. When Guruji left, so these जूते वूते पहन के गुरुजी बाहर चले गए, उनकी गाड़ी बाहर थी, and his Contessa was standing outside. Guruji had two Contessas. One used to be called Chui Mui. Its number was CS01M001, and another one was DLP1. These were the two Contessas. And Nitin was one boy who had the opportunity, who was given that freedom of driving his Contessa. He used to take Guruji for a drive. And Guruji, when that Dharmaraj was not present, then at that time, Nitin used to be told, "Tu gaddi leke jayega." He used to take Guruji for a drive in that Contessa. Very lucky boy from that angle. Very blessed, very blessed. गुरुजी की आपके पूरे परिवार पे बहुत कृपा बढ़ान है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है. So what happened after Guruji left? Then you have to collect those cups and saucers and glasses. कोई चारपाई के नीचे पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है. So that is what Nitin was doing. And suddenly Nitin shouted for everyone, "माँ इधर आओ, बब्बा इधर आओ, क्या हो गया, क्या हो गया?" He said, "Smell this carpet where Guruji Juti was kept. It has that fragrance of Guruji," and we kept on rubbing our nose there. That was my first experience, or for all of us to experience the fragrance of Guruji. So now you can think कि जहाँ पर जूता रखा है उसमें इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस. So this thing came out from the heading "Laddu the size of 2 cricket balls." Now I'll read it. As I was reading, Guruji blesses some people with such kind prasad that he produces by divine will, and which is referred to as a miracle. Now that is where the thought has come to my mind: miracle and manifestation. I have been fortunate enough to experience many such instances: gold earrings in dollar notes, hot halwa, mystery case barfi, chocolate, and vanilla barfi, moti chur, and besan laddus Himachali had.
One day in Jalandhar, Guruji had gone to a devotee's house for dinner. Jai Guruji uncle. Jai Guruji. अंकल सॉरी टू बॉदर यू इन बिटवीन, आपको इंटरप्ट कर दिया. थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी ये हिमाचली हैट के बारे में, थोड़ा सा बता देते. Because this, अब मैं Himachali hat, have you seen a Himachali hat? A prasad which looks like a Himachali hat. Oh, shape. You know, shape. so that is what Himachali hat is. Have you seen Himachali hat? महाराज ने मतलब जो है जब सचखंड का प्रसाद निकालते थे तो कभी-कभी ये शेप भी बन जाती थी. नहीं, ऐसा है कि Himachali hat. Have you seen a Himachali hat? Firstly, I want to ask you that question. हाँ जी अंकल. हैं? बाजार में जो A लोग hat which is Gold. which has got a band here like this, Yes sir. and which is round in shape. Yes sir, I have seen. ठीक है. So Himachali hat is, there is a prasad which is coming like a Himachali hat in his hand. हाँ जी. You got my point? हाँ जी अंकल. हाँ. So it is coming like a Himachali hat in his hand, you know, and actually it's a prasad, but its shape is Himachali hat. Yeah. Now I go to. That is what it is, you know, which has colors in it, which has that round shape in it, and it has colors in the form of a Himachali hat, right? It's clear uncle. So you will have to stretch your imagination a little bit, because it is very, very difficult to describe otherwise. You know. नहीं, आप बहुत फॉर्चुनेट है, इतने आपको इतनी दफे ये मौका मिला गुरुजी का सचखंड देखने का, तो बहुत ही वेरी वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट. Now, seeking an extra second of his divine presence, I finished off early the langar. I finished off early and sat next to him while the others were eating. He was sitting straight, with his wrist resting on his knee and his fist closed. I felt Guruji would give prasad. Nothing happens without divine will. Now, this is very, very important. Nothing happens without divine will. Probably Guruji wanted for him to realize that something is going to happen. Now, that is what he is meaning. Nothing happens without divine will. That's probably what he wanted me to take note of. Note of his fist. He was looking at his fist, because he has that inkling that he is likely to give prasad to somebody. So I was concentrating on him. As the Sangat gathered around after langar, conversation started. I was looking at Guruji's face. Just as he opened it, a laddu as large as 2 cricket balls appeared, as if you had a piece of a sponge that enlarged as you opened your face. At first, nothing seemed extraordinary. And then it sank in. A laddu had not just been produced out of thin air, it had grown in size as Guruji's fist opened up. Now, you have to think, you know, Guruji's hands looked so small at times. So small, so tender. Guruji's body was something like, you know, rose petals if you feel them like that. And his hands were so small. And when he gave you prasad, with one handful, with 2 hands, it would not accommodate in your hands, because that prasad grew in size. Now, that is what the beauty of everything was. Now, that is something has to be, you can imagine. Now, there are so many instances which I have seen.
Guruji's height was, if Auntie, if you would recall, was something like, he must be something around 5'6", 5'7", around 5'8". इतने तो Now he gave a trouser to a 5'10" he gave a trouser to a person, to army officer who was 6 footer, an armored corps officer. And when he gave that trouser to him, he said, "Kal paake aayi." This happened in my house at Jalandhar. Now, when next day he wanted to wear it, his better half told him, he said, "I'll wear these trousers and go." She said, no, it will hang on your this thing. You'll look like a joker. You know, armored corps officers are very fussy about dressing. And you will not believe, when he wore the trouser, as if it was tailored for him. तो ये गुरु के प्रसाद की महिमा है. It affected innate things also. That is what I want to convey. मतलब बाकी तो तेरा ये कल्याण कर दिया, तेरा कैंसर ठीक कर दिया, वो तो जो लाइफ जिनमें है उनकी बात है. But this thing applied to innate things also. So that is where, and this is described in Vedas also. Everything is Lord Shiva. Whether it's a small insect, whether it's a tree, or whether it's a leaf, or whether it's a flower, or whatever it is there, whatever you see in this world, the ultimate part. Lord Shiva is there, present there. Now that is where that Shabad comes, na? Galli jog na hoi. एक दृष्टि कर संसार जाने, जोगी कहिए सोई. So Guruji's manifestation is in everything, because he himself is a manifestation of Shiva. So he is everywhere. So many times we get carried away, by the physical form. What is happening that we get carried away by the physical form, and we get worried about Guruji क्या खाते थे. Now, तो एक बार क्या हुआ कि आंटियों ने पूछा, that time my wife and Sani auntie and all these people used to prepare langar. जैसे गुरुजी कदी कोई चीज चंगी बनी हुई तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ले आइए. तो गुरुजी ने कहा, कमलिए जेड़ा बंदा सारे संसार ਨੂੰ खिलांदा होवे, तुमने किसी की खवाओगे. Now that is where we get bogged down. गुरुजी ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? महापुरुष को तो भाव चंगा लगता है ना. इट इज योर फीलिंग. वही चीज तो बात आ जाती है. शबरी के बेर, सुदामा के तंडुल. शबरी ने बेर चख चख के कृष्ण भगवान को दिया था. क्यों? शी नेवर थॉट इट इज जूठा, बट हर फीलिंग वाज कि मैं वो बेर भगवान को दूं जो मीठा है. So many places these days we get bogged down on those smaller two things, But I think we will go further. The laddu had not just been produced out of thin air, it had grown in size as Guruji's fist opened up. Now it is about me. My father, a Fauji army man, had been posted out of Jalandhar, so Operation Packing. फौजियों ਦੇ बक्से बड़े ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਕਾਲੇ ਬਕਸੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ.
So had been posted out of Jalandhar, so operation packing was going on at home. There were wooden boxes, trunks, gunny bags, all of which had to be numbered. They were not yet numbered. They had to be, because numbering you do at the last. Lying around the house in the evening, Guruji visited our house. He used to come out of blue. Suddenly he used to come. We are so lucky. He used to bless us. Suddenly he used to come. In the evening, Guruji visited our house. As soon as he entered, the lights went out. And he said, emergency light packed in box number 13. Guruji's mannerism and speech are such that they make us believe that he is just like us. Now, that is where the facade is. That is where the facade is. We always thought Guruji is something like us. And that is where we did not realize that the God was sitting in front of us. Often it takes a while for that understanding to develop. So no one heeded his comment. The boxes were not even. A week or so later, when packing was complete and our helper was numbering the boxes with paint, it struck me. I looked at the freshly painted box number 13, and lo, the emergency light was staring at me. तो वही बात है, गुरुजी कहा करते थे, सोचो. We said, emergency light तेरे नंबर के पहले में कह दिया. I looked at and I had forgotten what Guruji had said until that very moment. Guruji knows our past, present, and future. Do not pretend, do not hide. We have seen many instances of this pretension. बड़ी बारी गुरुजी कहते थे, खोल दइए फाइल फिर. You remember, Aunty? बिल्कुल बिल्कुल. And I remember कि कोई आंटी एक दफे आई और वो घुसी और उन्होंने बस अभी प्रणाम ही किया था, तो एकदम से गुरुजी ने कहा, शास्त्री सेवा किया कर. मतलब ऐसा लगता था कि वो पुट ऑन इनटू अ स्कैनर. जैसे ही घुसे तो एक मेरी फ्रेंड थी, बहुत कतराती थी कि वो तो गुरुजी तो एकदम हमारा भाप लेते हैं, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे. That's very true. बिल्कुल एकदम से वो तो आपके उससे जज कर लेते थे. अगर कुछ और इंस्टेंसेस बताइए जलंधर में है तो आपको बहुत ही गुरुजी का साथ रहा. तो ये फाइल का क्या होता था, आंटी, what I understood of the file, because you know it better, because you must have heard a lot of times from your husband. If a file is not open, it will lie under the table, somewhere in the rack. But if the file is opened, it will move up, because there will be some note written on the file and it will move up to the next higher distance. But when Guruji used to say, file khol daiye, so a guilty person would say, Naji, Guruji, mat kholo file, because he had a guilt inside him. Yes. But, because आपको डर है कि मेरा कोई जो है राज नहीं खुल जाए. पर if you are clean at your heart, you will say, Guruji, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ है, खोल दो फाइल, क्योंकि फाइल खुलेगी ताई तो आगे बढ़ूगी. जब फाइल खुलेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी. तो महापुरुष का जो एक एक वर्ड होता है ना, इट हैज सो मच ऑफ ए मीनिंग बिहाइंड इट. सिग्निफिकेंस इतनी होती है. Again, the same thing comes, that it takes time to sink in. It takes very long time to sink in a particular sentence or a particular word of a Mahapurush. So, you said Jalandhar, I'll tell you about that. My mother was down with fever. My father and I had put ice packs on her all day, but to no avail.
Medicines did not work either, and her fever was not coming down. Suddenly, we received a call from Guruji that he would be arriving at home with the Sangat. Now, when this message came, you can imagine, heart of hearts, I said, yeah, ab Guruji will come, Sangat will come. Sangat will come means you have to do some preparation, langar banana hai, ye karna hai, wo karna. So that's sort of a, a strange feeling, yaar, ab ye kaise hoga, that kind of a thing. But he came in only with a couple of people, went into the room where my mother was lying down and said, Chal auntie, kuch nahi hoya, come, nothing has happened. He grabbed her hand and led her to the drawing room. I was at his feet pressing them. 5 minutes later, ma's temperature was normal. But his temperature had risen. He takes our illness on himself. Can anyone in this world do it? Our karma decides our suffering and well-being. And someone who can take my suffering can only be God Almighty himself. Very good. Now, this used to happen very often. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ मैं औखा हाँ मैनू ठीक करो, मैं औखा हाँ मैनू ठीक करो. अब वो क्यों औखे होते थे? Because he used to take ill of the people sitting in the Sangat on himself. Now that is where the comparison of when the ocean was churned at that particular time, the Amrit was taken by the gods, and the poison which was being thrown by the snake was making everyone sick. They could not tolerate, nobody could tolerate it. And that is where that poison was taken by Lord Shiva, and he held it onto his throat. And that's why he's called Neelkant. That is what Guruji exactly used to do. He used to take poison of the Sangat on himself and suffer for it. And we have seen it number of times, not only once, number of times. He used to really fall sick, and थोड़ी देर के बाद जैसे ही गुरुजी बिल्कुल मतलब मैं औखा हूँ, ठीक करो, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया. And suddenly he will wear a chola and sit down in his throne. The moment Sangat will come, he will be normal. You know, it is very, very, very difficult, to understand Guruji. महापुरुष को समझना बड़ा मुश्किल होता है. It is very, very difficult. वो किस पर्पस से आते हैं, क्या पर्पस होता है, क्यों आते हैं, और कैसे क्या करते हैं, और उनके क्या क्रियाकलाप हैं, ये समझना बहुत, it is not possible for a human being. I think that's enough for the day. जय गुरुजी अंकल. Already quite. जय अंकल. वो साथ में लीला जोशी आंटी बैठे हैं. नाउ शी इज को होस्ट. मैं 2 मिनट के लिए गुरु परिवार के मैसेजेस आए हैं कि जो ये गुरुजी महाराज का जो अभी आपने सत्संग सुनाया कि जैसे ही आपके घर में आए तो उन्होंने वो बुखार से पीड़ित लीला जोशी आंटी का हाथ पकड़ के कमरे में ले गए. तो वो जोशी आंटी जी से कुछ सुनना चाहते हैं, प्लीज. ओवर टू यू जोशी आंटी. जय गुरुजी अंकल. जय गुरुजी. आंटी कुछ बताएं प्लीज. अंकल ने तो बता दिया, वो मैं पहले भी सुना चुकी हूँ अंकल. मुझे बुखार था तो गुरुजी जो है वो संगत लेके आने वाले थे शाम को, और जैसा अभी उसमें बताया उन्होंने कि उन्होंने बोला लंगर तैयार करके रखना, और जोशी अंकल को बहुत चिंता हो गई कि जो अंकल गुरुजी आ रहे हैं और कैसे लंगर होगा, क्या होगा. एनीवे उन्होंने कुछ कुछ किया होगा, बट गुरुजी सीधे रूम में आए. जब एक्चुअली हुआ क्या था, गुरुजी लेट हो गए थे आने में, और जोशी अंकल परेशान कि क्यों नहीं आए अभी तक. तो इन्होंने नितिन को बोला कि
देखता हूँ मैं जाके लेके आता हूँ गुरुजी को, इतनी देर हो गई आए नहीं। और जिस एक रास्ते से ये निकली गाड़ी लेके, और गुरुजी दूसरे रास्ते से तब तक घर पे आ गए। और आके सीधे बेडरूम में आए और उन्होंने मेरे को बोला, दिखा हाथ, हाथ मेरी कलाई पकड़ी और जैसे बुखार ना देखते हैं ऐसे देखने लगे। और फिर कहने लगे कुछ नहीं हुआ, चल उठे चलो। फिर वो ड्राइंग रूम में जहाँ पे फायर प्लेस के सामने बैठे हुए थे, विंटर्स था तो फायर प्लेस जला हुआ था, सब लोग जो जो भी संगत आए थे 5-6 लोग, वो सब वहां पे बैठे। और मैं भी अपना कंबल ओढ़ के फिर गुरुजी के चरणों में सिर रख के मैं वहीं पे लेट गई। और गुरुजी ने जो कड़ा प्रसाद शायद जोशी अंकल ने ही बनाया था उस दिन, और वो लेके जो भी दिया तो गुरुजी ने थोड़ा सा खाया और बाकी प्रसाद मुझे दे दिया और कहा ले खा ले। मैंने खा लिया वो प्रसाद। और थोड़ी देर बाद जो वो कंबल के अंदर जो मुझे पूरा ऐसे पानी जैसा मेरे बिल्कुल सर 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 पूरा बॉडी में से पूरा निकलने लगा और एकदम मेरा बुखार टूटा। लेकिन गुरुजी खुद इतना ज्यादा उनको गर्म हो गए थे गुरुजी, और खुद उन्होंने ले लिया था बुखार। वो दिन से पता लगा था हमको कि गुरुजी खुद हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और बहुत उस दिन फिर मैंने कहा भी गुरुजी से कि आपने क्यों ऐसे किया। बट गुरुजी तो परमात्मा, गुरुजी वो खुद ही सबका ही ऐसे करते थे, वो हमेशा दूसरों का वो ले लेते थे। और आनंद आ गया आज के सत्संग में। और पहले सब लोगों की बड़ी कृपा, गुरु अंकल की वजह से सबको जो चीज हम नहीं जानते थे अब तक, ये जो नहीं सुना था वो भी हम सुनने लगे हैं। बहुत बहुत थैंक यू अंकल। बहुत सबको जय गुरु जी। थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड जोशी अंकल, बहुत ब्यूटीफुल आपने रीड किया है। आपसे आपसे ज्यादा अच्छा कौन रीड कर सकता है भला गुरु संगत में। बिल्कुल बिल्कुल, इतना नहीं, हमारा सौभाग्य है देखिए क्योंकि नहीं ऐसा है, वो हमारे फौज में एक वो कहते हैं ना कि खज्जी पे मत चढ़ाओ। खज्जी समझते हैं आप क्या होती है? खज्जी होती है खजूर का पेड़, और खजूर के पेड़ पे जब बंदे को चढ़ा देते हो तो जब वो नीचे गिरता है नहीं 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 तो कमर टूट जाती है उसकी, नहीं नहीं नहीं। है ना? हाँ, हमें तो तो इतना पता है कि आप इतने करीब से गुरु जी की सेवा करी है, तो इतना आपका नहीं, वही मैंने गुड बोला फॉर्चून हमने है। क्या, नहीं क्या, और उनको इतने करीब कितने, से देखा है। नहीं, वो गुरुजी ने क्या हमको, हमारे क्या कष्ट निकालने थे, हमसे क्या करवाना था। बिल्कुल देखिए ऐसा बिल्कुल होता है, सेवा, बिल्कुल सेवा अगर इस भाव से की जाए कि मैंने कुछ प्राप्त करना है तो वो फिर सकाम सेवा हो जाती है। जब गुरुजी करवा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्यों करवा रहे हैं आपसे, क्योंकि आपके कुछ कष्ट कर्मों टालने। को उन्होंने न्यूट्रलाइज करना है। बिल्कुल क्योंकि कर्म तो काटने ही पड़ेंगे, बंदे को अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा, ये गुरुजी कहा करते थे जी अंकल। कि कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। तो अगर, और गुरुजी कहा करते थे शूलीदा शूल बना था, मतलब अगर आपको कोई, शूली का मतलब होता है फांसी, कष्ट होना, बहुत कष्ट था और मतलब। शूल मतलब होता है प्रिक, शूल मतलब होता है प्रिक। तो फांसी से उसको प्रिक में कन्वर्ट कर देना, गुरुजी उसको ये करते नमामि थे। साहब। हाँ, तो ये था, ये ये हमारा तो कोई वो नहीं है इसमें, ये तो महापुरुष की कृपा होती है, जो उसने करवाना होता है, जिससे करवाना है बिल्कुल उससे बिल्कुल। करवाएंगे, जिससे नहीं करवाना है उससे नहीं महाराज की करवाएंगे। कृपा ये अंकल। अंकल मैं आपके बस कृपा ही है। अंकल मैं आपके घर में गया था एक बारी, और आफ्टर लंगर प्रसाद मुझे आपने लाइट और डिविनिटी का जो प्रीफेस है इसके बारे में फोकस किया था। आपने मेरे से पूछा था आपने कि हाँ, आपने कभी ये लाइट और डिविनिटी का प्रीफेस पढ़ा है। प्रैक्टिकली मैंने खाली हम्म, पढ़ के छोड़ दिया था, लेकिन जो हम्म, लेकिन जो रियल मीनिंग था उस दिन आपने मुझे बताया, और उसके बाद में मैंने 20-25 बार फिर पढ़ा उसको।
हर लाइन में पढ़ के उसका मनन करने की कोशिश करता हूँ, उसके मीनिंग समझने की कोशिश करता हूँ अभी भी। लेकिन अभी भी जिस हिसाब से आपने मुझे भावार्थ बताया था एक-एक शब्द का, इसमें बिल्कुल मेमोरेबल सेशन था वो। नहीं, ऐसा है कि वो वही बात आ जाती है। गुरुजी कहते थे शब्द सुनया करो, जे सिमरे से आप सिमराए। जे सिमरे मतलब जे सिमरे से सिमरे से जे सिमरे से आप सिमराए, आप सिमराए। तो वो खुद ही समझाने गुरुजी वाले कहते खुद ही है, जिसको समझाना है वो समझाने वाले खुद ही समझाने वाले हैं। और गुरुजी कहा करते थे शब्द सुनया करो। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम लोग शब्द सुनते नहीं हैं। फिर गुरुजी कहा करते थे सोचा करो। तो जब सुनेंगे, जब उसके ऊपर सोचेंगे, ध्यान तो करेंगे। हर बार सोच में एक नई चीज मिलेगी। बिल्कुल। यस, करेक्ट, That is what I feel, and that is वेरी what we should do, I suppose. वेरी राइट, वेरी ब्यूटीफुल सेशन अंकल, मेमोरेबल सेशन, थैंक्स अ लॉट। महाराज जी बहुत 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 डिवाइन। माथुर आंटी आपने बहुत अच्छी तरह नहीं नहीं नहीं, तो अंकल का वो इतना आनंद आ गया सुनने में कि मैं तो बिल्कुल नाची, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बट इनका इतना वो है कि, और हम शुरू से आई ऑलवेज लुक्ड अप टू बोथ अंकल एंड आंटी, तो बहुत ही नहीं हमने तो इनसे बहुत सीखा है। aunty, your look is very divine. नहीं नहीं नहीं, तो कुछ नहीं है। Yes. नहीं नहीं। थैंक्स अ लॉट जोशी चलिए, आंटी। thank you, thank थैंक you. यू वासन अंकल, जोशी अंकल, थैंक यू Okay, आंटी। thank you, Vasan uncle. Thank गुरु you, महाराज thank की you. कृपा हम सब पर बनी रहे, गुरु संगत पे बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरु महाराज से आगे लेते हैं।